अब PSLV C55 ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा स्वचालित है। Mission Director Sri S.R. Biju has given the authorization to begin automatic launch sequence, whereupon the LCC computers run a capsule of final confirmatory checks on crucial launch vehicle systems, and control is passed on to the onboard computers very close to T0. -4. Events for this mission. The mission today will last for about 20 minutes. The liftoff happens at T0 with the ignition of core S139 solid rocket motor. Its burn lasts for 110 seconds, taking the rocket to 50 kilometers altitude. The ignition of the second stage during the operational regime of PS2, the launch vehicle clears the dense atmosphere so that the closed-loop guidance is initiated and payload fairing is separated. The burn duration for PS2 is 150 seconds. By the time PS2 is separated, the rocket is at an altitude of 165 kilometers and acquires a relative velocity of 4.22 kilometers per second. The third stage, HPS-3, commences its operation at 262 seconds into the flight and continues to burn for 125 seconds. And thereafter continues to coast along with the ongoing launch vehicle for another 200 seconds. In this duration, while there is no thrust, control for the launch vehicle continues to be there. After HPS-3 separation at 587 seconds into the flight, PS4 and the payload continue to coast for another about 400 seconds. Against a small reduction of relative velocity, the rocket gains 207 kilometers altitude in the meantime. The burn time of PS4 for this mission is 131.6 seconds. About a minute after PS4 burnout, the primary satellite Helios 2 is injected in orbit, and 50 seconds thereafter, the co-passenger satellite Lumilite 4 also is separated. The PSLV orbital experimental module OM2 with its 7 payloads continues to be there in the orbit. आप देख सकते हैं यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर लॉन्च व्यू गैलरी का नज़ारा। यह बहुत ही उत्साहपूर्वक यहाँ लोग आए हुए हैं PSLV C55 का प्रमोशन देखने के लिए। हमारी सूचना के अनुसार करीब 2500 लोग यहाँ उपस्थित हैं इस प्रमोशन का आनंद लेने के लिए। कुछ अंतिम परीक्षण जारी हैं जो कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। इन परीक्षणों के पश्चात T0 पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर प्रज्वलन का कमांड इशू करेगा। अब हम उड़ान से 10 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर हैं। इस दौरान आपको PSLV C55 प्रमोचक यान के से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का वर्क हाउस कहा जाता है। अक्टूबर 1994 से शुरू करते हुए हमने PSLV के अब तक 56 उड़ानें देख चुके हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण उड़ानें चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, IRNSS सीरीज तथा IRSS सैटेलाइट्स के रूप में हमने देखे और ऐसे कई और प्रसिद्ध उड़ानों के साथ इसरो की विश्वसनीयता को बनाए रखने में कारगर रहा PSLV। इस मिशन में यह अपने कोर अलोन संस्करण में उपयोग में लाया जा रहा है। इसका अर्थ है इसमें कोई भी स्ट्रैप-ऑन नहीं जुड़े हुए हैं। प्रथम चरण पर ठोस नोदक वाला S139 बूस्टर है। इस संस्करण में यह 16वां लॉन्च होगा PSLV का।
प्रथम चरण में S139 कोर बूस्टर जो कि ठोस नोदक पर आधारित है, यह 109 सेकेंड के प्रज्वलन काल को पूरा कर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है तथा यान को करीबन 50 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करता है। फिर द्वितीय चरण PS2 जो कि तरल नोदक पर आधारित विकास यान के साथ यान को 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है। इसमें अर्थ स्टोरेबल वाले नोदक का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर PS3 यानी तृतीय चरण जो कि फिर से ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसमें 7.6 टन का नोदक और इसके साथ 240 किलो न्यूटन की प्रणोद उत्पन्न होती है। फिर अंत में सबसे ऊपर की ओर PS4 यानी चतुर्थ चरण PSLV का फिर से अर्थ स्टोरेबल नोदक का प्रयोग करता है। इसमें 2 तरल नोदक इंजिन्स लगे होते हैं जो कि 14.6 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर उपग्रह को निर्धारित कक्षा में लेकर जाते हैं और कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर उपग्रह को अंतःक्षेपित किया जाता है। -8 minutes. We are close to 7 minutes from T0. The PSLV stands 44.4 meters tall and in its core alone configuration weighs about 228.3 tons. PSLV C55 waiting for its turn for liftoff. The launch vehicle comprises of alternate solid and liquid stages. The first stage, PS1, is HTPB based solid propellant stage with a propellant mass of 139 tons. The stage is 20 meters long and 2.8 meters in diameter. 7 minutes. The second stage, PS2, is otherwise called PL40, which is 12.8 meters long and 2.8 meters in diameter. The highly reliable Vikas engine operating on UH-25 and N2O4 powers this stage. The third stage, called the HPS-3, is again an HTPB based solid propellant stage with 7.65 tons propellant. The stage is composite filament wound case of 2 meters diameter and 3.6 meters length. The fourth stage is PS4, a liquid stage 3 meters long and 1.34 meters in diameter, operating on MMH and MON3. For the present mission, it is loaded with 0.8 tons of propellant. This stage also functions as stabilized orbital platform which will continue to stay in orbit after the mission of satellite deployment is complete. The prime satellite Telios-2 is integrated over the payload adapter and ensconced inside the payload fairing. External power withdrawn. प्रमोशन की गतिविधियां जारी हैं। अब हम उड़ान से 5 मिनट 37 सेकंड की दूरी पर। इस मिशन की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह एक और समर्पित वाणिज्यिक मिशन है इसरो का। इस रॉकेट के संयोजन की प्रक्रिया को नवीन तथा उच्च सुविधा वाले नवनिर्मित PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी में तैयार किया गया है। इस यान से एरोडायनेमिक स्टेबलाइजर को हटा दिया गया है। PSLV C55 में पेलोड ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का इस्तेमाल कर 8 निर्धारों को अंतरिक्ष प्रयोगों में तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। यह प्रमोशन PSLV का 57वां प्रमोशन है तथा कोर लोन कॉन्फ़िगरेशन पे यह 16वां प्रमोशन होगा।
PSLV C55 टेलियोस 2 मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है। हमारे भू स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस पूरी तरह अपनी नजर यान पर बनाए रखते हैं, जिसमें हमें यान से जुड़े सभी आंकड़े वास्तविक समय पर यहां उपलब्ध होते हैं। इस मिशन के लिए शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने तथा बायक स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस की मदद से यान के आंकड़े टेलीमेट्री द्वारा हमें प्राप्त होंगे। -4 minutes. PSLV C55 on the launch pad. Speaking about the weather here in Sriharikota, there are tiny tufts of clouds, but the winds are benign. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। -3 minutes. इस मिशन के मुख्य उपग्रह टेलियोस 2 जो कि 741 kg का है और ल्यूमलाइट 4 16 kg के उपग्रह हैं। इन्हें 586 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री के झुकाव तथा 7.066 किलोमीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष गति के साथ निर्धारित कक्षा पर लगभग 20 मिनट पर स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद चतुर्थ चरण को अंतरिक्ष प्रयोगों के कार्य के लिए सक्षम किया जाएगा। -2 minutes. The automatic launch sequence progressing unhindered. We are about 90 to 100 seconds to go for the launch. परियोजना एक नवीन और संवर्धित सुविधा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंतर्गत, जो समाकलन, स्थानांतरण और प्रमोशन की नीति पर तैयार की गई है। इससे प्रथम प्रमोशन मंच से एक साल में प्रमोशनों की संख्या को दोगुनी करने में हम सक्षम होंगे। -35 seconds. अब हम उड़ान से 30 सेकंड की दूरी पर सर्वप्रथम आप देखेंगे RCT का प्रज्वलन -2.8 सेकंड्स पर, तत्पश्चात कोर बूस्टर का प्रज्वलन T0 पर होगा। -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Normal. And the PSLV C55 has lifted off, flying past the tufts of clouds. P2 tracking. भव्य नजारा PSLV C55 का सफलतापूर्ण उत्थापन।
PSLV C55 प्रमोचक यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर। दर्शकों का उत्साह, यान के कंपन सब हम यहाँ महसूस कर रहे हैं। यह बहुत उत्साहवर्धक होता है। यान पूरी तरह सामान्य और अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। The S139 motor PS1 developing nominal thrust of Sharon is in main 4,800 auto. kilonewtons. Auto is in main auto. Plus 1 minute. पहले चरण के प्रज्वलन के दौरान रॉकेट वायुगतिक यानी एरोडायनामिक, संरचनात्मक और नियंत्रण तंत्र की दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। First stage performance normal. P2 change route SCPT2. The burn of first stage of PSLV lasts for 110 seconds. प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए तथा करीब 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला चरण है उसे प्रज्वलित किया गया है। Second stage performance normal. Quick succession of several events. First stage has been separated. Second stage ignition is confirmed. Presently the altitude is 80 kilometers and we are 148 seconds from the launch. यान अब क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, यानी अपने सेंसर्स की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है। इस कड़ी में अगली घटना ऊष्मा कवच का पृथक्करण है। Plus 3 minutes. Payload fairing separated. Having cleared the dense atmosphere, the payload fairing has been jettisoned. PS2 stage is currently thrusting. ऊष्मा कवच के हट जाने के बाद Second और stage performance normal. यान क्लोज लूप गाइडेंस तंत्र में काम कर रहा है, जिसमें रेट जायरोस और एक्सेलेरोमीटर की मदद से वर्तमान स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृद्धि नियंत्रण करता है और उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता है। The PS2 stage is powered by highly reliable Vikas engine that develops 799 kilonewtons of thrust using the earth-storable propellant combination of UH25 as fuel and N2O4 as oxidizer. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 150 सेकेंड का है। तत्पश्चात इसे शट ऑफ कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। 150 seconds is Second the stage total burn separated. time of Third stage PS2. ignited. The second stage has been separated. Currently, SHA Third reported stage account performance stations normal. tracking. PS3 thrusting currently. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक पृथक्करण के पश्चात तृतीय चरण, जिसे हम HPS3 के नाम से जानते हैं, उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य कार्य कर रहा है। यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ PSLV C55 तृतीय चरण का प्रज्वलन काल लगभग 125 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कोस्ट फेज की शुरुआत होगी।
We are 325 seconds past the launch time. Third stage of PSLV, currently thrusting, developing nominal thrust, 240 kilonewtons. This stage will increase the relative velocity by 3 kilometers per second, and then Third it burns stage out performance and continues normal. to coast along with the ongoing fourth stage and the payload. The burn time for HPS-3 is 125 seconds. यान के सभी तंत्र पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए अब हम 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल पूरा हो चुका है तथा कोस्ट फेज की शुरुआत हो चुकी है। Vehicle in combined hosting. The combined coasting of PS3, PS4 and the satellite is currently in progress. This coast will last for 200 seconds for this mission. Vehicle performance normal. 1 minute. यान अपने निर्धारित कक्षा की ओर बढ़ता हुआ यह कोस्ट फेज जारी है। तृतीय चरण के पृथक होने के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में कुछ समय होगा। कुछ समय पश्चात चतुर्थ चरण का प्रज्वलन किया जाएगा। The fourth stage of PSLV is scheduled to commence its operation at 982 seconds into the flight. In the meantime, let me throw some light on the passenger satellites taking ride in this mission. Plus 8 minutes. Vehicle performance normal. The Telios-2 satellite is developed under a partnership between DSTA from Government of Singapore and ST Engineering. The services being provided through NSIL, the commercial arm of Indian Space Research Organization. Its predecessor, Telios-1, also had been launched by a PSLV in the year 2015. Telios-2 carries a synthetic aperture radar payload. It will be able to provide all-weather, day and night coverage and capable of imaging at 1 meter full polarimetric resolution. The spatial resolution of radar data is directly related to the ratio of the sensor wavelength to the size of sensor's antenna. That means to be able to get higher spatial resolution for a given wavelength, the antenna has to be impracticably big. Synthetic aperture radar is an answer to this objective, in which a sequence of acquisitions from a shorter antenna are combined to simulate a much larger antenna. टेलियोस-2 इस मिशन में मुख्य उपग्रह के रूप में है। टेलियोस-2 एक भूप्रेक्षण उपग्रह है जिसे DSTA सिंगापुर और ST इंजीनियरिंग सिंगापुर द्वारा निर्मित किया गया है। यह ऐसा दूसरा उपग्रह है जो इसरो द्वारा प्रमोचित किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में टेलियोस-1 नामक प्रथम भूप्रेक्षण उपग्रह को सफल प्रक्षेपण किया गया था। यान में तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। Vehicle performance normal. यान अभी प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ चतुर्थ चरण का कोस्ट फेज जारी है।
जैसा कि हम आपको टेलियोस उपग्रह के बारे में जानकारी दे रहे थे, टेलियोस 2 इस कड़ी में संवर्धित यह दूसरा उपग्रह है। इसरो द्वारा सिंगापुर के लिए अब तक कुल 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया जा चुका है। टेलियोस 2 उपग्रह सिंथेटिक अपर्चर रडार लिए हुए है, जिससे सभी मौसम और किसी भी समय हाई रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट इमेज लेने के लिए यह सक्षम है। यह 741 केजी का उपग्रह, जिसे निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है, ताकि किसी भी समय यह आपदा प्रबंधन, संसाधनों की निगरानी तथा वातावरण से जुड़े बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध करा सके। इसके अलावा एक अन्य को पैसेंजर के रूप में ल्यूमलाइट 4 उपग्रह है। ल्यूमलाइट 4 सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर स्टार सिंगापुर द्वारा 16 केजी का लघु उपग्रह है। इसे इसी श्रेणी के अन्य उपग्रहों से उच्च डेटा संचार सुविधाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस उपग्रह का विकास हाई परफॉर्मेंस स्पेस बोर्न VHF डेटा एक्सचेंज सिस्टम के तकनीक प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य सिंगापुर मरीनटाइन सेफ्टी और वैश्विक नौ परिवहन समुदाय को ई नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करना है। Some time ago, you had seen the third stage having completed its operation, being jettisoned from the ongoing launch vehicle at 587 seconds into the flight. Presently, PS4 is coasting. We are 12.5 minutes past the launch time. Apart from Telios 2, the co-passenger satellite Lumilite 4 is also from Singapore. It is co-developed by the Institute for Infocom Research, I2R, of A-Star and Satellite Technology and Research Center of National University of Singapore. Lumilite 4 is an advanced I2U satellite developed for the technological demonstration of the high-performance spaceborne VHF data exchange system, VDES. Using the VDES communication payload developed by I2R and STAR's scalable satellite bus platform, it aims to augment Singapore's e-navigation, maritime safety and benefit the global shipping community. Vehicle performance normal. यान के सभी तंत्र पूरी तरह सामान्य और यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। इस क्रम पे अगली घटना PS4 यानी चतुर्थ चरण PSLV का प्रज्वलन है। वर्तमान में पुणे स्थित ग्राउंड स्टेशन की मदद से हमें PSLV C55 के आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं। Just 14 minutes. इस मिशन में PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के रूप में चतुर्थ चरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। चतुर्थ चरण के नोदक के पूर्ण व्यय हो जाने के पश्चात इसे कक्षीय प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाएगा। यह तीसरी बार होगा जब PSLV के चतुर्थ चरण का प्रयोग एक प्रयोगात्मक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जा रहा है। सभी उपग्रहों के पृथक होने के पश्चात इन कक्षीय नितभारों को पावर ऑन किया जाएगा। इसके लिए इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिसे PS4 के स्थिरीकरण की पुष्टि हो जाने के पश्चात विस्तृत किया जाएगा। इन सोलर पैनल्स को भी ऐसी दिशा में विस्तृत किया जाएगा जिससे सोलर पैनल्स का अधिकतम विद्युत उत्पादन किया जा सके। DOEM-2 में इस बार कक्षीय प्रयोग के लिए नितभार इस प्रकार हैं: पायलट, PSLV ऑर्बिटल OBC एंड थर्मल, IIST द्वारा निर्मित,
ARIS-2, Advanced Retarding Potential Analyzer for Ionic Studies, फिर से IIST द्वारा. ARCA 200, Electric Propulsion System, Bellatrix द्वारा निर्मित. इसके अलावा DSOD 3U, DSOD 6U और DSOL ट्रांसरिसीवर्स ध्रुव स्पेस द्वारा निर्मित है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा स्ट्रॉसबेरी सेंस पेलोड भी इसमें सफर कर रहा है. अब कुछ ही क्षणों में PS4 चतुर्थ चरण का प्रज्वलन अपेक्षित है. A noteworthy aspect of today's mission is to use the fourth stage as stabilized orbital platform to carry out a number of experiments. Fourth stage engine started. The fourth stage has just now commenced its operation and developing nominal thrust. Minus 17 minutes. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन सामान्य और वर्तमान में 14.6 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यह उद्देश्य कक्षा की ओर उपग्रहों को ले जा रहा है. यह तरल नवदक पर आधारित चरण है जिसमें MMH और MON को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है. This is a pressure-fed Fourth stage twin performance engine normal. which is fed by monomethyl hydrazine and mixed oxides of nitrogen, which power the fourth stage of PSLV. Each of these engines develop 7.4 kilonewtons thrust. Nominal burn duration of PS4 for this mission is 131.6 seconds. Plus 18 minutes. Speaking about its stabilized orbital platform, it carries 7 payloads and an expected operational span of 1 month. 5 of these are through in-space. One is pilot, a payload developed by S-Space IAST aimed at validation of in-house developed systems in flight. Another payload called ARIS-2, also developed by IAST. It has retarding potential analyzer having indigenous sensor module. Its predecessor has flown over PSLV C55. Next is Sense, which is developed by Indian Institute of Astrophysics. This payload is a centroiding star camera to identify stars in its field of view and estimate coordinates in its look direction. And Plus as 90 we minutes. describe this, we have a Airplane confirmation injection conditions are achieved. that the PS4 has completed its operation. Next event is the major event, the injection of the prime satellite in its distant orbit. जी हाँ, अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात PS4 को शट ऑफ कर दिया गया है. यान अभी दिशा निर्धारण तथा पूर्ण अभिवृद्धि प्राप्त कर रहा है. उसके पश्चात सर्वप्रथम टेलियोस 2 उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा और उसके बाद ल्यूमलाइट 4 उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा. Helios 2 satellite separated. और हर्ष का पल यहाँ पर PSLV C55 मिशन अपनी पूर्णता की ओर. टेलियोस 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है. The primary satellite Helios 2 has been injected into its orbit and you are watching its onboard camera views on your screen. Next up is the co-passenger Lumilite force separation event, which is awaited very eagerly now.
right, 4 satellites separated. अन्य उपग्रह लूमलाइट 4 को भी सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है अंतरिक्ष कक्षा में। Handing over to mission director. और इसके साथ ही PSLV C55 टेलियोस 2 मिशन की सफलता हासिल कर ली गई है। Helios 2 and Lookalike 4 satellites into the desired orbit. PSLV C55 Helios 2 mission is fully accomplished. Many congratulations to ISRO and the customers. The workhorse PSLV has yet again proved its reliability. We take leave from you to continue to be with us for the address by Secretary TOS, Chairman ISRO, Shri S. Somnath. जी हाँ, इस मिशन की सफलता के बाद हम आपसे आज्ञा लेते हैं। आगे सुनते हैं चेयरमैन इसरो से। Please come. Congratulations, PSLV and NSIL for this exciting launch. PSLV C55 Terios 2 mission. The PSLV has placed both the satellites, Terios 2 and Loomlight, in the intended orbit. This was a mission towards east direction, and the inclination is very small, 9.99 degrees, very precise. And the PSLV in its 57th mission has once again demonstrated its high reliability and its suitability for commercial missions of this class. So congratulations once again to NSIL and PSLV team for this exciting mission. In this mission, we had a core alone configuration of the PSLV, which again has many specialities and improvements that we have done to bring down the cost of the rocket as well as its integration time. And this is with the goal to have increased production and launches of PSLV in the times to come, especially when the industry is taking over from us to operate in large numbers. So congratulations to SDSC SHAR for making these improvements, as well as PSLV project for improving those engineering of the PSLV systems. I also want to thank the launch vehicle centers of ESSC, LPSC, IASU, IPRC, SDSC for building these rockets, and also the ISTRAC network for enabling the entire data processing, monitoring, and ensuring the vehicle is in safe trajectory, as you have already seen in the mission display. So we have some more exciting things to happen after this primary satellite injection. The upper stage of the PSLV is now the poem, which is going to write some more poem like what we did last time. This time we have 7 exciting payloads on board PSLV, and these are fixed payloads which will be on top of the upper stage, powered by it, controlled by its own special computer, and commanded based on commands from the ground. And the upper stage will be like almost a satellite, which will work if everything goes well for next 1 month or so. We have 3 payloads from Indian Institute of Space Science and Technology. We have an exciting payload of electric propulsion from Bellatrix, and there are 2 payloads of satellite deployment and deploying systems from Dhruva, and Indian Institute of Astrophysics also has 1 payload. So we hope that when the stage goes down and come back, we will have those data of those activities that are happening on the stage.
And possibly you may be knowing that there is going to be a deployable solar panel first time on upper stage of a rocket. That is going to be another exciting thing to happen. So we will wait for some more information later, which we will come back and tell you through our social media handles about how this upper stage of the poem is performing very well. And until then, I will request our mission director as well as NSIL CMD to talk to you about the mission. So over to Radhakrishnan, CMD NSIL. Good afternoon and hearty congratulations to Team ISRO. I am so excited and happy that it has given such a proud moment for New Space India Limited to our esteemed satellite customer from Singapore. Satellite built by ST Engineering and DSTA, which is a governmental agency. And I'm happy to inform here, this is the first time a radar imaging satellite has been made by the Singapore team indigenously. And I would like to take the opportunity to thank on behalf of NSIL and ISRO, the team Singapore, for this wonderful effort that you have taken up.